Hello, my dear students. My name is Sunando Devnath, and you are watching Imavate Academy. So we are in the chapter Linear Inequations, a chapter from class 10th syllabus of ICSE, Mathematics. We are doing exercise 4B from Concise Mathematics. Let us proceed with the chapter. I hope you all have watched the previous lectures for this chapter that I have already uploaded on my channel, and they are arranged in a separate playlist. So watch those previous lectures if you have not watched them, and then proceed with this lecture. Right. So let us continue. So if you open exercise 4B of Concise, we have done question 1. Now let us proceed with the next question, question 2, and you see how we do these questions. So I hope you are able to see question number 2 from Concise Mathematics, exercise 4B. For each graph given alongside, write an inequation taking x as the variable. See, we have to write the inequation. We don't have to write the entire solution set, but the inequation for the given graph, for the given solution on the number line. So ध्यान से देखो, -1 has a dark circle on it. This is not a hollow circle. Hence, -1 is included, and all values less than -1 are taken in the solution. All those values which are less than -1 are taken. -1 is also included. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का x is less than equal to -1. Means all values which are less than -1, ध्यान से देखो, x is less than -1 and also including -1 because we have an equal to sign. ठीक है? This solid circle, the dark circle on -1 says that -1 is also included. बहुत easy है. Number 2, look at this graph. This 2 is included. Yes, I hope you all are getting it. This is simple. 2 is included because there is a dark circle on 2, and all values greater than 2 are included. So x is greater than equal to 2. All values greater than 2 and also equal to 2 are in the solution set. So हमने लिख लिया inequation. Then you see over here 4 is included. Sorry, -4. -4 is included, but 3 is not included. And all values between this range is also included. So x lies कहाँ से? -4 से कहाँ तक? 3 तक. And if you see -4 is included, so put an equal to sign below this less than. ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से एक बार लिख रहा हूँ, ठीक से लिख रहा हूँ. x belongs to कहाँ से कहाँ तक? From -4 till 3. ठीक है? -4 से 3. -4 is included, so there is an equal to sign below this less than sign. Okay, this means x is greater than equal to -4 but less than 3. That is written in the number line. -4 से ज़्यादा but less than 3, and -4 is included, 3 is not included. Number 4, -1 is not included. ध्यान से देखो, hollow circle है, but 5 is included. तो कैसे लिखेंगे? x over here, और हम यहाँ लिखेंगे -1 जो include नहीं है. So I have not put an equal to sign here, but here when I write 5, this 5 is included, so I will put an equal to sign also below this less than. So this means that x is less than 5 and also equal to 5. I hope you are getting this. This is simple. So question 2 हमने कर लिया. Proceeding to the next question, question number 3. For the following inequations, graph the solution set on the real number line. Means we have to plot the solution set on the real number line. Acha, I am erasing this part. I hope you have written it, you have understood and written this. Now we are solving question 3. ध्यान से देखो, question 3 का first question. -4 less than equal to 3x - 1 less than 8. ठीक है? बड़े आराम से इसको solve करेंगे. We have 2 inequations. So I have already taught you, when you have inequations combined like this, you split it into 2 and solve individually and then again recombine.
keeping only x in, and finally जब हम combine करेंगे, recombine करेंगे, then only x will be in the center. तो अभी मैं पहले वाले इनइक्वेशन को लेता हूं, which is -4 less than equal to 3x minus 1. Means I have taken only this part. Simple solve करेंगे. Let me keep x only on one side and send all the other things on the other side. -4 is already there. This -1 goes on that side, takes the form +1. Less than equal to 3x. So -4 plus 1 is -3. And here less than equal to 3x. Dividing both sides with 3. अब हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 is a positive number, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, so the sign of inequality will not change. So यहाँ पे मैं -3 को 3 से डिवाइड किया, 3x को भी 3 से डिवाइड किया, ये लेस देन इक्वल टू ऑलरेडी है, the sign did not reverse. -1 लेस देन इक्वल टू x, ये हमें एक मिल गया. अब दूसरे वाले इनइक्वेशन को उठाऊंगा मैं. What is that? 3x minus 1 less than 8. This is the second one, second वाला इनइक्वेशन. 3x को मैं इधर रखकर -1 को उस साइड भेज दूंगा. I will have 8 plus 1. 3x less than 9. x less than 9 divided by 3. तो हमारा आ जाएगा 3. ठीक है, ये 3 को मैं उधर भेज दिया और 9 3s are 3 3s are 9 कट गया. So I have x less than 3. Now this inequation number 1 and this inequation number 2 I will combine. How do we combine? ये मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है. बहुत इजीली कंबाइन करेंगे. मैं इस साइड लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे नीचे लिखते जाना. मैं इधर जगह है, मैं इस साइड लिख रहा हूं. ठीक है, so from here I am jumping to this side. Combining 1 and 2, or I hope you are also solving in your notebook along with me. Don't just copy, understand and solve it. तो बीच में रखो x, इधर लेस देन का साइन दो. इफ यू सी ओवर हियर, इसको देखो, the open end of the inequality is towards x and the pointed end is towards -1. So pointed end is towards -1 and opened end is towards x. करेक्ट है. यहाँ पे मैं इक्वलिटी साइन भी दे दूंगा because you have a less than equal to over here. इधर देखो, pointed end is towards x, opened end is towards 3. So here we will write a 3. Open end is towards 3, pointed end is towards x. There is no equal to sign. So here simply a less than sign is there. No problem. Hence we have combined it. ये हमारा combined हो गया. अब इसको हमें क्या करना है? What has been said, graph the solution set on the real number line. इसको number line में अब plot करना है. बड़े आराम से करेंगे. Solution on the number line. So what we will do? Heading दे दो, solution on number line. So we have to show -1. Also we have to show 3. अब इस तरह का तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 जो था हमने कर लिया है. क्वेश्चन 1 तो आई होप ये तुम्हारे लिए प्लॉट करना काफी इजी है. क्वेश्चन 1 जो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डाला है, आई हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1. All of these questions we have discussed this in the previous lecture, just the lecture which came before this one. तो वो देखे हो तो बिल्कुल इस टाइप का हमने किया है. तो this is very similar to that. You will be able to do it. हमें क्या शो करना है? -1 तो दिखाना ही है, but some extra values भी हम दिखाएंगे. Like if I show -1 here, I will also show -2 here. Extra दिखा दिया. I have 0, then 1, then 2, then 3. ठीक है, तो मैं इधर वैसे ही करूंगा. -1 over here, -2, मैं यहाँ 0, 1, 2, 3 और एक एक्स्ट्रा शो कर देता हूँ 4. So -1 is included because there is a equal to sign. -1 के ऊपर एक डार्क सर्कल कर दिया. 3 is not included. 3 के ऊपर एक hollow सर्कल किया. And then I will join the space between them. I will thicken the space between them. Okay. तो मैंने देखो, ये तो मैंने येलो इंक से किया है. तुम्हें एग्जाम में थोड़ी येलो से करना है, तुम्हें ये पेंसिल से करना पड़ेगा. ये जो कंप्लीटली मैंने नंबर लाइन बनाया है, दिस यू हैव टू ड्रॉ विथ पेंसिल. ठीक है, वेरी वेरी सिंपल. नाउ क्वाइट सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. 3 का नंबर 2. आई होप यू हैव कॉपीड इट. देखो, कॉपी का मतलब है समझते हुए तुमने सॉल्व कर लिया होगा. सिंपली डोंट कॉपी. ठीक है. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट, विच इज पार्ट
2 ऑफ क्वेश्चन 3। पार्ट 2 क्या कहता है? इन इक्वेशन है x minus 1 less than 3 minus x less than equal to 5। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। I'll split it into two parts. So first in equation is x minus 1 less than 3 minus x. मतलब I have taken only the first part, this one. ठीक है? Now how do we proceed further? मैं x को एक साइड लाऊंगा, नॉन x टर्म्स को एक दूसरे साइड ले जाऊंगा। So this x is already here and I transpose this minus x, so it becomes plus x on this side. ये 3 इधर already है, this minus 1 comes, becomes plus 1. 2x less than 4. Both sides I'll divide with 2, so I'll have x less than 2. ठीक है? Finally I've got this. I have divided 2 on both sides and I've got this. This is in equation number 1. Then I will solve this another half, which is 3 minus x less than equal to 5. Minus x remains on this side, less than equal to 5 is already here, minus 3 udhar chala gaya. I have minus x less than equal to 2. Right? अब मैं क्या करूंगा? I'll multiply both the sides with minus 1. Why am I doing this? Because I don't want minus sign with x. So I want a plus sign with x. So I'll multiply minus 1 on both sides. So I'm erasing this stuff. इधर मैं erase कर रहा हूँ. I hope तुमने already लिख लिया है, तो मैं इस space को clear कर दिया. ठीक है? नहीं लिखे होगे, back जाकर लिख लेना. Previous वीडियो को पीछे ले जाना और लिख लेना. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. So we have minus x less than equal to 2. I'll multiply minus 1 on both sides. So minus x into minus 1. और इधर हमारा 2 है, उसको भी into minus 1. The moment I multiplied with a negative number, this inequality sign will reverse. अभी less than equal to था, तो ये greater than equal to बन गया. ठीक है? And minus x into minus 1 is positive x greater than equal to minus 2. ये हमें मिल गया. अब हमें ये जो इन इक्वेशन 2 मिला और 1 ऑलरेडी हमें मिल चुका था, तो इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे. ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, x को बीच में लिखेंगे, लेस देन साइन देंगे. यहां देखो, x के तरफ पॉइंटेड एंड, 2 के तरफ ओपनड एंड. तो x के तरफ पॉइंटेड एंड एंड 2 के तरफ ओपनड एंड. दिस इज द थिंग. यहां देखो, x के तरफ opened end and -2 के तरफ pointed end. If I write -2 over here, the same thing is here. -2 के तरफ pointed end, x के तरफ opened end, but here you have to put a equal to sign also. So यहाँ पे मैं नीचे equal to डाल दूंगा. Be very careful. Don't forget the equal to sign. Combined कर लिया. अब तो बिल्कुल बड़े आराम से बन जाएगा. इस टाइप्स के क्वेश्चन तो क्वेश्चन 1 में बना चुके हो ऑलरेडी. बड़े आराम से बनेगा. Draw the number line. This is the number line. And minus 2 is somewhere here. मान लो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक -3 भी दिखा दिया. ठीक है? और हमें क्या करना है? हमें 2 तक ले जाना है, बट 2 से एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हमें शो करना है. कि -3 हो गया, इधर हमारा -1 है और इधर 0 है, इधर 1 है, 2 एंड एक्स्ट्रा मैंने 3 कर दिया, एक एक्स्ट्रा 4 भी दिखा दिया, स्पेस था इसलिए. -2 इज इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज अ इक्वल टू साइन. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इक्वल टू है. एंड 2 यहाँ पे, 2 के नीचे यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है. सो हियर यू हैव अ हॉलो सर्कल. एंड देन द वेरी सेम थिंग, डार्कन दिस स्पेस. ओके, मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं, तुम्हें पेंसिल से करना है. मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं. हो गया हमारा. वेरी वेरी सिंपल. एंड आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को कर लिया. आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 की तरफ हम बढ़ेंगे. सो लेट अस वाइंड अप दिस वीडियो हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. कीप स्टडीइंग. टेक केयर.